Okay, good evening, Saurabh, Meg. Good evening, sir. Good evening, good evening. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सीजन तो ज्वाइन नहीं करेगा आज. ओके ओके सो कल हम लोग we just went through these selling situations that the salesman maintains does two things. One is maintenance of selling and second one is development of selling. ठीक है, business development basically. Okay. What are the selling skills required? What are the selling skills required to do the task? The first important thing is obviously communication skill. Second thing, communication skill, there is another aspect of communication skill that is called listening skill. Just give me 1 second. मेरा सर्दी खांसी. Okay. So, communication skill is, of course, one of the most important things. We all know about that. And communication skill ke saath saath, listening skill is also important. That's a part of communication skills. Okay? Because if you remember that when we spoke about communication, we said that sender sends a message and the communication and that message is received as a communication by the receiver. Correct? So listening skill is that receiving that message. Okay? And that's very important. And there are two other aspects: problem solving skills and negotiation skills, along with conflict management and resolution skills. These are the 4 or 5 skills that's very, very important for selling. Correct? And we know this. I'm not going to spend time on this. Okay, that a sender sends a message, it is received by the receiver, and he gives a feedback. It again comes back as a comes back to the sender. Okay, and this is this picture, this model we have already seen. There's an encoding done by the sender and there's a decoding done by the receiver. Correct? ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं. And there is something called a communication barrier, which is called noises. Right? Communication barrier, like language. I am speaking in one language, you don't know that language, so that becomes a communication barrier. Sound becomes a communication barrier. Our connectivity in internet becomes a communication barrier sometimes. There are a lot of different communication barriers, and we should try and avoid those barriers as much as possible. Correct? Communication process, of course, we know that body language is a very, very important part of communication process. Your body also actually speaks. Correct. We all possibly have learned it somewhere or the other. The personal appearance, our grooming, our appearance, our way we look, that is very important in communication, particularly sales job. Okay, with sales job, we say the grooming is a very, very important aspect. Again, even हम लोग तो अपने ट्रेनिंग के टाइम में इवन शू पॉलिश नहीं देखते थे कि शू पॉलिश है कि नहीं. ठीक है. Posture, आप कैसे बैठ रहे हो, the way you are standing, the way you are sitting, these are all postures which are important. Gestures, your eye movements. Gestures are your eye movements. Okay, whether they're right. Your eye and hand movement. Usually हम लोग बहुत हाथ को use करते हैं very often when we speak, and those gestures are very important to keep in mind. Okay, facial expressions. हम लोग बहुत सारे facial expressions करते हैं to express ourselves. Correct. So those are important. Eye contacts are important, of course. And space distancing. How much distance are you there with your
customer or client or the person you are speaking, spacing between you and your customers. Okay. These are a couple of things that's a part of the communication process. And then the process of listening, paying attention, then interpreting, then remembering, then evaluating, and then responding. This is the whole listening process. Think how much time it should take. If you have to listen carefully to somebody who is speaking something and asking you a question, that's 7 seconds or 5 seconds that he's asking you a question, you should pay complete attention to him. Don't process the answer in your brain immediately. Okay? Because the more you take time, you will come out with intelligent answers. You will come out with intelligent communication. If you don't take time and process the answer while he's asking you a question, you have not interpreted it well. You don't remember what the person is saying. You do not evaluate what the person is saying. You will land up into stupid answers or stupid communication. Okay, so this is something very important from attention to response, because many a times if you have come across people who are in that level, leadership levels and all, they speak very slowly. They speak very slowly. If you speak to them, they will listen to you carefully. धीरे धीरे बात करता है, धीरे धीरे सुनता है, and then he responds. And that is the time taken for interpretation to evaluation. Okay. Levels of listening, feedback. Feedback is one level of listening. Paraphrasing, whether you have understood the question. Okay, sometimes what happens, I have asked you a question and you immediately get into answering that without even understanding the whole question. So sometimes it's good to paraphrase, paraphrase or clarify. What is paraphrasing? Basically asking the same question in a different format. Okay. So if I ask you, Meg, what's your name? And you are not clear about it, then possibly you can always paraphrase like, sir, did you ask me my name? Okay, do you understand what is paraphrasing now? Then sometimes you clarify. Okay, sir, pardon me, I couldn't understand it. Can you please explain me once more? Look, clarify karte na bahut sahi, bahut baar. That's also empathic. Empathetic listening. Empathetic listening is listening as if you were the person who is talking. Okay. Putting 100% attention to him. Whenever I ask you or talk to you, you nod your head, you use your hands and body movements and gestures. Okay, आप बात नहीं करते हो. But many a times you nod your head. आप जैसे अभी कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप अभी कर रहे हो, you're nodding your head. That means I know you are actively listening. You are an empathetic listener. Okay. You are trying to understand what I am saying. Okay. And finally, of course, active listening. Absolutely disturbed listening, undisturbed listening. Okay. That's very, very important. Conflict management. Of course, conflict management has many stages, starting from potential opposition and incompatibility. So when does a conflict happen? You must have all faced conflict in the office, in the market, in the field. When does a conflict happen? When two people have different opinions, when two people have different opinions, different thoughts or activity, or they have different objective to achieve something. Perfect, absolutely perfect. Yes. In fact, first of all, they are opposed to each other. Okay. Then their thoughts are not compatible. एक दूसरे के साथ thought match नहीं करता है. ठीक है ना? Second stage होता है where cognition and personalization. ठीक है. Many a times when I don't understand, I get into conflict. Cognition is something when you put it in your head. Cognition and personalization is something which leads to a conflict. Okay. Personalization, I've taken things in personally. That leads to a conflict many, many times. Correct. Intentions are again a reason for conflict. Your intention and my intention are not same. And so there is a conflict. And then comes, once the intention is there, the fourth stage is behavior. What kind of a behavior? Are you there to argue, to debate, or you are there to, manage the situation? Okay, that behavior comes out. And finally, the outcome. What is the outcome of that conflict? Did you manage to resolve the conflict? Or did you aggravate the conflict? Okay, so these are the 5 stages. It starts with your
Just it starts with your, opposite opinions, as you said rightly, opinions and your incompatibility. You are not able to, both of you are not compatible. You don't want to understand each other. Your thoughts are different. Your thoughts do not merge. Okay, so they are incompatible. To start into personalization, intentions. What are your intentions? Are your intentions to fight, or are your intentions to argue, to debate, to behave? And this is a very, very important thing. This, as a managers, all of you are going to face in some time or other. Mostly conflict happens in teams. And if you are team leaders and team managers, your one of your major tasks is to resolve conflicts. If the conflict continues, then your team is gone. And if the team is gone, your performance is gone. Correct. So that's a very, very important skill that as a manager, you guys need to, start building up. Okay. Communication, personal variable structure. So basically, when you say the perceived conflict and felt conflict, these are two sides of conflict. Okay. So basically, एक तो है कि मुझे लगता है, my opinion doesn't matter, और एक है actually हो रहा है. Both of you are arguing, both of you are fighting. Okay. And that comes from a condition where the communication doesn't match. You have not communicated properly. You have taken things personally. Okay. There are different variables which both of you have in your mind. The structure itself. Okay. कभी-कभी देखना, team में, there's a team, suppose you are a senior manager and you have a one level or two levels under you. Okay. And you will see that structure itself creates conflict. मैं इसका बात मानूं क्यों? He is not that qualified like me. And there will be a lot of things like वो तो boss को मक्खन लगा के promotion मिल रहा है. The structure itself, creates conflict. आप इवन एक लेवल के बंदों को किसी एक को उसके अंदर से उठा के बोलो नहीं आपका कोई प्रमोशन नहीं, आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर बन जाओ, आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट लेके आओ वगैरह. वो बेचारा कोऑर्डिनेटर आपने बनाया, उसको कोई प्रमोशन नहीं दिया, कोई सैलरी इंक्रीज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी उसके टीम में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया. अरे देखो बॉस बन गया विदाउट एनी रीजन. होता है ना. These are very common things in corporate life, in industry. Okay. And from there, two things actually give birth. One is either it's a perceived conflict. ये लगता है कि इन दोनों में बन नहीं रही. And one is actually नहीं बन रही. There's always a fight. There's always an argument. There's always a mud throwing to each other. Okay. Conflict handling intentions, competing, collaborating, compromising, avoiding and accommodating. ये 5 तरह से आप conflict को handle कर सकते. पहला तो है competing. ठीक है. एक दूसरे के से ज्यादा करो. ठीक है. You are competing with each other. ठीक है. Try and prove yourself. That's the way. ठीक है. You are better than me. ठीक है. Second is collaboration. We come together. चलो भाई नहीं मारपीट करके कोई फायदा नहीं. We are both in the same level. We are both in the same task. Our objectives are same. Our goals are same. Let us work and do together. ठीक है. Compromising. और एक third है compromise कर लो. नहीं भैया मुझे वो सब मारामारी फाइटिंग करके करना नहीं आता है. ठीक है. आप जो बोल रहे हो चलो कर लो. घर में you both are married. ठीक है. And with your wives at times, there's too much of tension, too much of conflict, and that's the time when you say, अरे यार मैं सारा दिन काम करके आता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, let me compromise. ठीक है आप जो बोल रहे हो चलेगा. होता है ना? Most of the times होता है. Most of the times either of you compromise. हर टाइम ही होता है. हाँ? Every time ही होता है सर. Every time ही होता है. वही बोल रहा हूँ. So this is a part of life. And particularly, married life, this is a part because you want to have this resolved. You want to continue the relationship. You can't say, नहीं यार आप मुझसे झगड़ा कर रहे हो, चलो घर से बाहर निकल जाओ या मैं बाहर निकल जाता हूँ, ये दोनों चलो डिवोर्स कर लो या ऐसा होता नहीं. Usually people who are good in their married life, they try to compromise. Either of them compromise and come to a solution. And fourth one is avoiding. चलो
झगड़ा हो रहा है, अवॉइड करो उसको। ठीक है, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कुछ दिन तक अवॉइड करते रहोगे तो दे विल स्लोली मूव आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट समथिंग सिमिलर टू कॉम्प्रोमाइजिंग इज एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग और एकोमोडेटिंग में डिफरेंस ये है कि कॉम्प्रोमाइज करना मतलब एक दूसरे को मान लेना। ठीक है, एक दूसरे का जो भी डिफरेंस इन ओपिनियन है उसको मान लेना। एकोमोडेटिंग है उसको अपना लेना। आप बोल रहे हो समथिंग लाइक इफ माय वाइफ सेज डोंट स्मोक, ठीक है, मैं एकोमोडेट कर लिया, स्मोकिंग बंद कर दिया, एकोमोडेट कर लिया। बट कॉम्प्रोमाइज करना इज व्हेन आई से जबरदस्ती में उसको मान रहा हूं। कॉम्प्रोमाइज इज मोस्टली जबरदस्ती। एकोमोडेटिंग है सच्चे दिल से आप उसको एकोमोडेट कर रहे हो, नहीं चलो आपने बोला स्मोक नहीं करना है, मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ। बट कॉम्प्रोमाइज चलो नहीं ठीक है, आप बोलते हो जबरदस्ती मुझे मानना पड़ रहा है। स्लाइट डिफरेंस, फाइन लाइन, बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एकोमोडेटिंग। ठीक है, ओवर कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज बिहेवियर अदर्स रिएक्शंस। ठीक है, सो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यहीं पर बात आती है इमोशनल कोशेंट की। हम लोग बोलते हैं ना आईक्यू एंड ईक्यू। आईक्यू नॉलेज से आती है। आईक्यू तो होता है ना नॉलेज, पढ़ाई करो आईक्यू बढ़ेगी, ठीक है, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इमोशनल कोशेंट जो है, इमोशनल कोशेंट आपको बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और वो तैयार होने में काफी टाइम लगता है until unless you intentionally practice it। कि नहीं मैं झगड़ा नहीं करूंगा, नहीं मैं अपने आप को शांत रखूंगा, नहीं मैं कोई भी चीज करने से पहले सोचूंगा ये वो क्यों हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल quotient. This builds your emotional quotient. This is your emotional behavior, and during conflict management that's more important. A good leader will never get high during conflicts। बड़े शांत दिमाग से दोनों को समझाएगा। ठीक है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा, कभी कभी अकोमोडेट करेगा, कभी कभी कोलैबोरेट करेगा, कभी कभी अवॉइड करेगा। ठीक है, दैट बिहेवियर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना तो एक बंदे का बिहेवियर एक्चुअली बिकम्स द रिएक्शन ऑफ द अदर पर्सन। आप शांत होते जा रहे हो और वो और चिल्लाते जा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब शांत रहोगे ना, इट स्लोली गेट्स resolved because that person at one point of time the other person will understand, no ठीक है मैं कुछ गलत कर रहा था। ठीक है, एंड लास्ट स्टेज में इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस, डिक्रीज ग्रुप आइदर कॉन्फ्लिक्ट में। जैसे मैंने बोला, आप अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर सकते हो, आप अगर बिहेवियर में देखोगे बहुत सारे बॉस होते हैं चिल्लाते हैं, कोई भी सिचुएशन में चिल्ला पड़ते हैं, and the people working with him they don't like it। at that time what happens is they would either डर के मारे काम करेगा, फियर साइकोसिस में काम करेगा, but that will not yield great performance, and that's where you decrease the performance। however, if you really behave well and try and resolve conflicts well, I think that will always increase group performance। आप इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे ना, इट ऑलवेज इंप्रूव परफॉर्मेंस। compromise, accommodating, collaborating. Most important is collaborating when you are having a conflict management। Understand, हम लोग SWOT बोलते हैं ना, SWOT एनालिसिस सुने हैं ना, हम लोग किए भी हैं हम लोग पहले। वो जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, हर सिचुएशन को उस पर इवैल्यूएट करो कि ये सिचुएशन का स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेसेस क्या है, इसके थ्रेट्स क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है। इफ यू कैन गेट वन strength, one opportunity, that's a winning point for you। अगर आप में और if you Meg and Saurabh, you are having a conflict regarding something, suppose you are doing the case study, I have given you a case study and you are having a conflict of understanding, correct, conflict of opinion there। okay, for each one of you, what you should do is take the other's opinion and put it into a SWOT। what are the strengths, what are the
weaknesses, what are the threats, what are the opportunities. Okay. And then what will happen is you will okay. So how is once you understand that now and you get at least one strength of the opinion that Saurabh has, one strength of the opinion that Meg is having, and one opportunity of the opinion that Meg is having, take that and try to collaborate. हर एक के ओपिनियन में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज होगा आपको, ये तो आप मानते हैं ना, कोई पूरा गलत तो नहीं होता है, तो जो भी सही है ना उसको लो एंड कोलैबोरेट, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट. आई इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे करियर में मैं हर बार यही किया हूं कि दूसरा जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यू शुड टेक ओपिनियंस फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, फाइंड आउट दोस स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड से दैट चलो आपके इसमें मैं ये लेता हूं एंड लेट अस प्रोसीड. And he will be happy कि चलो यार, he's not absolutely avoiding me, ignoring me, he's not trying to compete with me, he's trying to collaborate with me. Collaboration से better conflict management हो ही नहीं सकता. Okay, was that okay, was that clear? Okay, आप लोगों ने शायद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को इतनी डिटेल में सोचा भी नहीं होगा कभी. हाँ, होता है झगड़ा होता है, अनबन होता है, ठीक है. What do you think? Yes, sir. In our activities, we are just on daily basis handling these situations. So we just follow the task and behavior activities. So if task behavior is more important, then we are just collaborating and accommodating. And if task is more important, then we are just focusing on the task. That person to compromise the things. Right. But I think in future, when you have that kind of a situation where you have a conflict between what should I do? Should I take care of the task or the behavior? Then that we just accommodate and collaborate with the correct. Things. Most important is collaborate with them. How do you collaborate? That is something which you if somebody is saying कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँगा, then why is he saying that? Ask that question. Why is he saying that? Does it have some strength? Does it have some opportunity where we can collaborate? Negotiation skills, very, very important aspect of, I would say always, once you have developed the business, you are in the process of developing the business, and when you have come to mostly something called deliverables, you know, my price, my delivery time, okay, my suppose any kind of delivery, what प्राइस लेके नेगोशिएट करते हो, डिलीवरी टाइम लेके नेगोशिएट करते हो, योर रिसोर्सेज लेके नेगोशिएट करते हो, मेरे को कितना लेबर देना है, कितना वर्कफोर्स देना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. आप साइज ऑफ बिजनेस लेके नेगोशिएट करते हो. नेगोशिएशन इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द क्लाइंट. जस्ट लाइक बिजनेस डेवलपमेंट इज द इनिशियल पार्ट, नेगोशिएशन इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है. No customer in this earth will accept everything on face value. ठीक है, कि आपने गया, आप प्रोडक्ट बोल दिए, आप पिच कर दिए, you have communicated him about all the values of your product and he says, okay, yeah, this is the price and give it to me. Very rare. ठीक है, there will be a negotiation, at least little bit. Can you give me some discount? When will you deliver? So I will deliver in 3 days. Can you give me it in 2 days? ठीक है. How many laborers will you provide? So I will provide 5 laborers. Can you give 8 laborers for me? Okay. So this is always a situation which happens when you are into businesses. Okay. And situation and timing for negotiations is important. Formulation for a bargaining strategy is important. The theory and strategy of principle negotiation separate the people from the problem. Don't take, if there is a negotiation, if somebody is saying, can you reduce the price? Don't mix up the person and the problem. The problem is price, focus on price. Don't ever try, and this is the basic core, Gita ka part is something like that. Most of the time, the mistake that we do is that when I am negotiating, I am taking things personally.
You know, my personally when I take things personally, I'm having a mental conflict with you and me. And then that particular problem of price goes for a toss. अब उसको कैसे मैनेज करोगे वो आपके दिमाग से निकल जाता है. आप लोग एक पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हो. मैंने वी ऑल डू इट. We get into a personality conflict, we get into a ego conflict. So separate the people from the problem. Okay, focus on interest, not on positions. Okay, focus on interest, not on positions. So what does it mean? That why is he asking for it? If he's reducing if he wants me to reduce price, what is his interest? Try and understand that. Not that he has asked for 25% discount. Okay. Why has he asked for that? What is his interest? Focus on that. Because if you focus on that, then you come into a conclusion that, okay, I think it's important for him. नहीं तो आपको क्या लगेगा, यार ये बेमतलब का 25% डिस्काउंट मांग रहा है. How will I give it? But when you understand why is he asking, what is his interest, that's the time you will realize, no, I think I should do something for him. If not 25%, can I give him 10%? Is there a way I can help him out? That's the time you will get into a helping mode, collaborating mode. Got it? Invent options for mutual gains. It should always be win-win. Both of you win. ऐसा नहीं कि one wins, the other loses, the one loses, the other wins, or both of you lose. No, there are 4 situations, right? Win-win, lose-lose, win-lose, or lose-win. Try and avoid the rest of the. It should be a win-win for both of you. There should be some mutual gain. Your gain should be my gain at the end of the day. Correct. And insist on objective criteria, not subjective. Objective is absolute numbers. Absolute solid numbers, objective. Can you give me 10% discount? Yes, 10% discount is objective. Can you give me some discount? Is very, very subjective. Correct. Got it. Have I made this clear? Sir, I have a question. Sir, for example, sir, because in a professional life, sir, we are negotiating with with the vendors, with the suppliers, with the agencies, and with the HR also. Yes. While joining, right? Correct. So there is situation different in both the aspects. For example, sir, if you're first of all, how to negotiate with HR in the terms of salary. Correct. Second thing is if because if we are negotiating with the suppliers, so that means that I know the rates, like the competitive rates, which is going in the market, the landing price of the product, correct. And due to this price, we can ask for because we can talk to the vendor that the price is quite higher, and you should reduce the price, right? So here there is 2 things. First of all, because we should know the quality and we should know the market rate. Correct. Then we can negotiate with anybody. Correct. But as you mentioned that the second point, focus on the interest, not on position. Yeah. So why? So if both of you, if I am a vendor and you are the client, okay, both of us should do the same thing. ऐसा नहीं कि I as a vendor will do and you as a client will not do. Both of us. So the point here is that if you want to really come into a win-win situation, both of you should understand the interest of the other person. Okay, why is that vendor asking a price which is 10% more than the market? Okay, and I as a vendor should also understand why is Saurav Shukla as a client or the purchase manager asking for a price which should be at par with the market. Okay. So if you understand that, if I understand that Saurabh Shukla is asking this to make it par at the market because his boss, his engineer or his super boss has asked that he should get at the lowest price. But did his super boss say that the quality should be the low? There's anything called the lowest quality? All the products cannot be same, right? If you're asking for a higher price, possibly you have some value added to your product that is not the same with others, right? So can you explain that to the person that was, yeah, right, you're absolutely right that the product price is higher than the competition.
However, these are the reasons why the product price is higher. So what is the reason that you are asking for a lower price? Is that that you want to match the price with competition, or is that there is somebody else who is telling you to get the lowest price in the market? So lowest price, and then try and explain if the lowest price always doesn't mean the best quality. I can explain you why I am charging you 10% more than the nearest competition, because this. So if I may request, if you go to your engineer and explain him this, I think he will understand. And the thing is that then you give him again, the third point, give him again that if he uses your product, possibly, I'm just giving hypothetical reason. If he uses your product, possibly he's going to not need to change the oil for next 12 months. For other products, he will have to change the oil in 6 months. Okay. There is some benefit in your product. That's why you are charging premium. Right, sir. Correct. Even if the benefit is your brand name. Okay. Goodyear is a new company in the market for oils. Your brand name is not that. If you are from, suppose, Castrol, if you are from Gulf Oils. Okay. So possibly you can come and say, sir, I am from Gulf Oil, the best quality oils in the world. And you can trust me that the brand I am giving you is something which will always have an edge on quality over others. So you are paying for the brand. You are paying for the trust. So, negotiation में दोनों को, you have to, both of them have to collaborate, both of them have to accommodate, both of them have to compromise, both of them have to come to a single point. Okay. So when you are negotiating on price, you need to be very clear why is he asking it. There are sometimes people who are asking it just because he's want to compare your product with somebody else. And there are sometimes people who want to ask because, the thing is that, I don't have so much budget. We are a small company. We do not have so much budget. Our budgets are very skewed. I can tell you very honestly what is my budget of oils. Okay. I want your brand is a great brand. You have a great product. I know you should be higher price, but if little discount you can give, I can be in my budget. Okay. And then you think possibly as a vendor, you start thinking, chalo yaar, isko pehli baar help kar dete hain. He is a small company. Okay, let me help him, and possibly he can be a long-term client for me. That's what win-win is. That you give something, he gives something. What is your gain? Your gain is a long-term client. What is his gain? He can accommodate within his budgets. Okay, so the mutual gain is important. Understanding the other person's interest is important. Okay, not the position. Ki aap mujhe 10% discount dete ho. No, that's not important. Why is he asking for the 10% interest? And can I really, if I really understand that, can I accommodate that? I'm not compromising. I'm accommodating. Correct. So did I answer your question? Right, sir. And it happens very often. Even HR, चलो HR की बात करते हैं. आप HR के साथ salary negotiate कैसे करो? ठीक है. So the first thing is that sell yourself as a brand to the HR. Why should the HR give you, if you are supposed, just hypothetically, you are getting 10 lakhs and you want 15 lakhs. What is that unique in you that HR should give you 15 lakhs over all the other people who are having 10 lakhs? Make yourself a brand, sell your values to him, to that lady or that person. That boss, if I join your organization, I am going to give you this, I'm going to give you this, I'm going to give you this, I'm going to give you this. Okay. And this is the reason and the experience I have got in 3 or 4 companies. I've worked in this, blah, blah, blah. This experience is something which I'm going to get into your organization. Okay. I am here to make your business bigger. Okay. And I can say you with confidence that if you pay me this, you're never going to lose. You're going to gain much more than what you're paying. Okay. Then let HR tell you, nahi, aap jaisa to bahut hai hamare yahan par. You will never be able to tell you. Both of you are going to win, right? At one point of time. Aapko salary milna hai, usko ek acha banda milna hai. The moment you start selling yourself to him as a good brand, that's the time you have started winning yourself. Okay. And you're also telling him that I am going to give you this. So he is going to win at the same point. Correct.
So that's where you come together. And there's something called the best act is to know one's partner. This is a very important term. Okay. Now, partner is something which is called the best agreed terms of a negotiation agreement. ठीक है. कभी-कभी क्या होता है ना, जब suppose salary. Suppose this is interesting. This is something I'll just discuss a little bit with you. You know, and because you need to understand partner, otherwise most of the time क्या होता है ना, हम लोग जिद पकड़ लेते हैं. ठीक है. हम लोग इसलिए जिद पकड़ लेते हैं. बेस्ट हम लोग सपोज आप HR के साथ बैठे हो, नया कंपनी में जा रहे हो. ठीक है. आप HR के साथ बैठे हो and you are negotiating with him on salary. So आपका सब कुछ हो गया, सारा इंटरव्यू प्रोसेस हो गया. You're negotiating with him or her on salary. And you are coming from an organization who is supposed paying you 10 lakh rupees. And you are going to another organization who has said that I will give you 11 lakh rupees. And you feel no, भाई minimum 30% तो देना चाहिए hike. मेरा 13 लाख से कम में नहीं जाऊंगा मैं. ठीक है. So that amount of 13 lakhs जिसके नीचे आप नहीं जाओगे. ठीक है. That's the best alternative to your negotiative agreement. ठीक है. उसके नीचे मैं जाऊंगा नहीं. उसके नीचे मेरे पास और 2 कंपनियां हैं. वो ऑल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए. तो अगर आपके पास 2 कंपनी नहीं है, करंट कंपनी तो है जो मुझे 10 लाख दे रही है. Right, sir. If you have another company in your hand who is giving you 13 lakhs, do you have a best alternative in your hand? If you have that, आप वहां पर बोल सकते हो, बॉस नहीं, I am not going to accept your job at 11 lakhs. So best alternative to a negotiated agreement. कि इसके नीचे मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूं. ठीक है. I have an alternative. If you have, and do not get into a negotiation without partner. Always get into a negotiation with a partner. कि नहीं, इससे नीचे मैं accept नहीं करूं. And there should be solid reason for that. And this reason always is not money. Remember one thing. आप जा रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास दूसरी कोई नौकरी नहीं, ये एक नौकरी मिली है. 30% हाइक देने की जगह में वो 10% हाइक बोल रहा है आपको. वो आपको खरीदना चाह रहा है क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. Only thing that you can think about that time is there. ठीक है. Am I in a situation which is worse than what he or she is giving? मेरा सिचुएशन इतना खराब है कि वो मुझे किसी भी भाव में खरीद ले. That's your best alternative, ना? Always price is not the best alternative. Salary is not the best alternative. मेरा करंट कंपनी इतना बुरा है कि मैं 10% में बिक जाऊं. मेरा अपना क्वालिटीज इतना बुरा थोड़ी है कि मैं 10% एक्स्ट्रा सैलरी में बिक जाऊं. There is a solid reason why I need 30% hike. ठीक है. So at that point of time, this current company salary is your partner. ठीक है. Current company salary plus your own quality, your own experience is your partner. भैया मैं तो मेरे पास ये है अभी, आप वो नहीं देते हो तो मैं नहीं ले रहा हूं. हाँ, दोनों में एक there can be a compromise somewhere कि ठीक है, चलो उसने 11 बोला, मैं 13 बोला, आके 12 में खड़ा हो गया. ठीक है. Then you need to actually decide कि really am I going to take that 12 lakhs or 13 lakhs is my partner, because I feel that अभी तो मुझे 10 मिल रहा है, 3 लाख मेरे क्वालिटी के लिए उसको देना चाहिए. अगर वो नहीं देता है तो मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं. ठीक है. There are plenty of other options. I will try. ठीक है. Got it? Understood? Clear? Partner is a very, very important concept, and question to ask oneself before making an offer: should I give the first offer first? पहला ऑफर मैं दूं या वहां से आएगा? Should I start with a higher offer? Should my preparation lead to a strategy? Should I sketch an agreement from the beginning? Should I construct a framework for an agreement? Should I move toward the commitment gradually?
So 7-5-6 चीजें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे समझो. फर्स्ट है कि डू आई ऑफर हिम, गिव हिम द फर्स्ट ऑफर. सो द प्राइस इज दिस. एक हो सकता है स्ट्रेट अवे, मेरा प्राइस इतना है, मैंने फर्स्ट ऑफर दिया, उसने बोला नहीं ये प्राइस नहीं, आप ये प्राइस ना. सेकेंड इज, मुझे 10 लाख में बेचना है इसको, मैं ऑलरेडी उसको बढ़ा के बोल रहा हूं, आप 15 लाख दो. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेटजी नेगोशिएशन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शुड माई प्रिपरेशन लीड टू अ स्ट्रेटजी. ये जो पूरा नेगोशिएशन होता है ना, इट्स अ स्टोरी, ये कहानी है. इसको लिख के पूरा स्क्रिप्ट बनाओ कि मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद वो क्या बोल सकते हैं, उसको ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पूरा स्ट्रैटेजी बनाओ इसका. And then, because preparation is the best way to handle negotiations. So just do not walk in for a negotiation. Straight away walk करके एक negotiation room पे घुस गए, ऐसा मत करो कभी. Have a lot of preparation, a good strategy before you get into negotiation. क्या बोलोगे ज्यादा, give him higher offer and then come down, क्या strategy से बोलोगे, etc etc etc. ठीक है. Should I sketch an agreement from the beginning? ठीक है, एकदम exactly that's what I'm saying. पूरा story sketch करो एकदम beginning से, trying from getting into the room to coming out of the room. Construct a framework for agreement कि जो agreement होगा, what can that agreement be looking like? ठीक है. Should I move towards the commitment gradually? मैं उस कमिटमेंट में धीरे धीरे जाऊंगा या इमीडिएटली जाऊंगा, प्राइस नेगोशिएशन हुआ, मैं थोड़ा सा 10% कम कर दूंगा, वो 5% बढ़ाएंगे, बीचों बीच आके क्लोज कर दूंगा, या मैं धीरे 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 आई विल टेक हिज कमिटमेंट. एंड वो धीरे धीरे करने के लिए यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आपको एवरी एस्पेक्ट को उसकी तरफ से समझना पड़ेगा, आपकी तरफ से समझाना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम योर साइड, व्हाई यू आर वांटिंग मोर, why you want more time, why you want more price, why you want more resources, and also understand why he wants to give a less price, less resources, less time, and so on and so forth. Once you understand that, of course, you have to move gradually, one by one. No, you can't get everything together. At one point of time, you'll get one thing. So don't hurry up. And I'll tell you a small example. When I left Nestle and when I joined this company called McCormick, so McCormick just came to India from US. They were a New York, Washington-based company, and they came to India and they acquired this brand called Kohinoor Basmati rice. Okay, that's a big brand that time, but unfortunately, the company had to close down, and McCormick purchased that brand. And I joined them as a general manager of marketing and sales. So I possibly joined them somewhere around September, and the next season for basmati rice big sales was 26 January, which was, big days hote the na, big bazaar big days, Amazon big days and all that. Celebration hota na 5 din ka, 15th August, 26th January, these are big days bolte na. So all these supermarkets, they celebrate big days, and during big days they give huge discounts on every product. And basmati rice, sugar, these commodities, they sell at a huge price. So they negotiate with companies to get discounts. And this is the first time I was doing this on commodities. So main jab nikal raha tha, I was supposed to go to all the supermarket headquarters, Reliance, Big Bazaar, Aditya Birla, More, Spencer, सबके पास जाना था, जाके negotiate करके volume book करना था. किसी ने बोला 100 टन लूंगा, किसी ने 200 टन लूंगा, किसी ने 1000 टन लूंगा, ऐसा बोलना है. And total becomes my volume and target. तो मैं फर्स्ट आया था बॉम्बे में, बिकॉज बॉम्बे में 3 हेडक्वार्टर थे, एक रिलायंस का था, एक बिग बाजार का था, और एक आदित्य बिरला मोर का था. ठीक है. तो मैं जब फ्लाइट से उतर के बाहर निकला, तो मेरा जो यहाँ का एरिया मैनेजर था, बंदा, सीनियर बंदा, पुराना बंदा था इधर कोहिनूर का, वो मेरे को हाई हेलो करने के बाद पूछे, सर क्या है सर, इस बार का प्राइसिंग क्या है? तो मैंने बोला, दोस्त इस बार तो कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया नहीं, कोई बजट है नहीं. Man, you won't believe that वो बंदा एकदम उसका चेहरा सूख गया
कि बड़े साहब आ रहे हैं, बिग बॉस आ रहा है और बिग बॉस मार्केट में जा रहा है मेरे साथ और विदाउट एनी डिस्काउंट बिग डेज में नेगोशिएट करेगा, कैसे करेगा उसको नहीं मालूम। तो चुपचाप कुछ बोल तो नहीं पाया, मैं उसका सुपर बॉस हूँ, उसके ऊपर 2 लेवल है तो उसके ऊपर मैं हूँ, तो बेचारा कुछ बोल तो नहीं पाया। मैंने बोला चलना देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फर्स्ट वी वेंट इनटू बिग बाजार, द टफेस्ट क्लाइंट, ट्रस्ट मी सौरभ, टफेस्ट क्लाइंट फॉर मी, टफेस्ट वेंडर और कस्टमर फॉर मी। वो अगर लेगा तो 1,000 टन तो कोई बात ही नहीं है, 1,000 टन बासमती में एक बार उठाएगा, ठीक है। वहां पर गया सबके साथ, मैं वी वर सिटिंग इन अ मीटिंग रूम, उनका कैटेगरी मैनेजर था, परचेज हेड था, वगैरह वगैरह, 4-5 बंदे थे सीनियर बंदे। मैं पहुंचा, सबसे पहली बार परिचय हो रही है, मैं परिचय किया, देन आई दे सर, हाँ सर बताइए क्या है इस बार कोहिनूर कितने में देंगे आप लोग, क्या देंगे कैसा देंगे। तो मैं ना बड़ा मायूस सा चेहरा करके उनको बोला, आई हैव नॉट कम हियर टू डू एनी नेगोशिएशन, क्योंकि इस बार हमें मालूम है हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे हाथ में कोई डिस्काउंट कोई बजट कुछ नहीं है, ठीक है। अरे सर ऐसा कैसा हो सकता है, बजट नहीं है, बिग डे में बजट नहीं है, विदाउट डिस्काउंट कैसे बेचेंगे, ये वो हजारा फलाना ठिकाना, सारों पांचों लोग ने चिल्लाना शुरू कर दिया उस मेरे ऊपर। तो मैंने बोला क्या करें यार, दिस आई एम ऑल्सो न्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी हूँ और मैं भी समझ रहा हूँ कंपनी इज गोइंग थ्रू नॉट अ सो ग्रेट फेज, इस बार तो हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग ये कमिट करेंगे कि आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उतना तो दे देंगे, लेकिन हाँ आप अगर थोड़ा लोगे तो हम वही देंगे, 1,000 टन नहीं लोगे 500 टन लोगे चलेगा, बट हाँ डिस्काउंट हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे। और मैंने मोटा मोटा हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है डिस्काउंट नहीं है मेरे पास। तो वो लोग कोहिनूर के बिना, कोहिनूर बासमती के बिना वो बिग डे चलने वाला नहीं है, बंद हो जाएगी, माने ग्रोसरी सेगमेंट बंद हो जाएगी बिग डे का 6 दिन का सेल। तो वो लोग बोले क्या हुआ, ये बड़े साहब आ रहे कंपनी से और आके बोल रहे डिस्काउंट नहीं है बिग डे में, कैसे चलेगा। तो मैंने बोला क्या करें आप बताइए, अब 200 टन लोगे तो चलेगा, 1,000 टन वाले पार्टी को मैं ये अगर बोल रहा हूँ कि सर आप 200 टन लोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपको उतना माल भिजवा दूंगा, बट वी कांट गिव यू डिस्काउंट। तो फिर एक दूसरे की तरफ झांकने शुरू किए, ताकने शुरू किया, फिर अपने आप में बोले नहीं नहीं इतना कम में तो होगा नहीं, बट क्या कीजिएगा कुछ तो बताइए। मैं बोला देखिए आपको बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे कि आप अगर बोलोगे तो मैं, मेरे पास थोड़ा बहुत बजट दूसरा जगह से मैं ला के आपको दे सकता हूँ, बट आप जो सोच रहे हो 14, 15, 20% बजट, वो जिंदगी में नहीं आए मेरे पास। 2, 4, 5 हजार रुपये इधर उधर पड़ा होगा, मैं उठा के आपको दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज बिग बाजार है इसलिए दे सकता हूँ, नहीं तो किसी और को देने का मतलब ही नहीं है। ट्रस्ट में उस जीरो को, जीरो डिस्काउंट था, मैं उनको सिर्फ 2% डिस्काउंट दिया, 1,000 टन के मैं 1,500 टन बेच के आया, ठीक है। लेकिन हाँ वो नेगोशिएशन मेरा 2.5 घंटा चला, क्योंकि मैं जीरो में था, वो लोग 15-20% की डिस्काउंट सोच रहे थे, मुझे देना ही नहीं था, क्योंकि मेरे कंपनी से मुझे जो बजट दिया है मुझे सबको बांट के देना था, सब बड़े लोगों को बांट के देना था। और मैं कंपनी को बोल के आया था मैं उल्टा 50 पैसा कमा के दूंगा एक्स्ट्रा आपको, डोंट वरी। तो कंपनी में एक्चुअली मुझे 3% दिया था। मैं सबको यही खेल खेल के, सारे 12 क्लाइंट्स थे, वेंडर्स, बड़े वेंडर्स, बड़े बड़े कस्टमर्स थे, मैं सबको यही गेम खेल खेल के ना 2% डिस्काउंट में पूरा सारा साल का टारगेट करके आ गया। वो जो मेरा एरिया मैनेजर था, जो मॉडर्न ट्रेड का सीनियर बंदा, वो मुझे बाद में बोलते सर, आई मीन इनफैक्ट जब मैंने अकाउंट में छोड़ दिया तभी बोलता है सर, वो पहला दिन आपके साथ मेरा सारा जिंदगी याद रहेगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आप कैसे ऐसे खेल के जा सकते हो, मुंबई से निकल सकते हो ऐसा खेल के। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, मैंने वो समझ सकते हो यार, कोई 20% डिस्काउंट मांग रहा है और मैं उसको 2% में अटका के रखा हूं, ठीक है। सो एवरीथिंग मैं, कम्युनिकेशन मैचेस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, बात करने का तरीका वगैरह 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 सब मिला के वो नेगोशिएशन होता है। हाँ सर थोड़ा मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो। लाइक कंपनी की तरफ से बोला गया था कि 3% का मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन गिव। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ना, बासमती राइस में किलो में बात होती है, 3% वगैरह नहीं बोलते। तो सपोज मेरा प्राइस है 100 रुपया किलो, नॉर्मल प्राइस है 100 रुपया किलो, तो कंपनी मेरे को डिस्कस करके बोलता है बॉस इस साल का टारगेट है मेरे को 10,000 टन बेचना है, ठीक है, आपको मैं 10,050 पैसा या 1 रुपया दे देता हूँ 10,000 टन पे, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1,000 माने बेसिकली कितना हो जाता है, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया होता है ना,
1000 into 1000, हाँ 1 करोड़, 10 1 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख नहीं, रुपए, 10,000 into 10,000 यार, 10,000 into 1000, 10,000 into 1000, 4 3 7, हाँ 1 करोड़ हो गया सर। 1 करोड़ ना। तो राइट। 1 करोड़ रुपया कंपनी ने मुझे दे दिया, बोला भाई यही आपका बजट है, आपको 10,000 टन बेच के आना है, हम्म, ठीक है। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है हम्म, कि मैं उसको 3-4 रुपया पर किलो डिस्काउंट दूंगा। हम्म, मैंने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 5 करोड़ का डिस्काउंट जाएगा मेरे पास से, और मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ 1 करोड़। हम्म, और वो भी मैं कंपनी को बोल के आया हूं कि भाई 1 करोड़ क्या, मैं तो आप 1 रुपया दे रहा हूं, मैं 50 पैसा में बेच के आऊं, हम्म, ठीक है। हम्म, दैट वाज द नेगोशिएशन। कि वो बंदा जो अपोजिट में बैठा है वो बोल रहा है कि भैया मैं आपसे 1000 टन लूंगा, आप मुझे 5 टन 5 रुपया पर टन दोगे, मैंने 50 लाख दे दोगे, हम्म, अब आई मीन 5 लाख दे दोगे। और हम्म, मैं उसको बोल रहा हूँ मैं 5 लाख नहीं, मैं 50,000 दूंगा आपको, हम्म, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो बहुत ये करके, तो मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ मैक्सिमम, हम्म, ठीक है। ओके, बिकॉज मेरे लिए बांटना ये था, मेरा हम्म, बांटना ये था कि अगर वो ना बोलता है, हम्म, ठीक है, अगर वो ना बोलता है तो मेरा 1000 टन सेल लॉस होगा, हम्म, ठीक है, लेकिन वो चलेगा, मैं 1000 टन सेल लॉस होगा तो मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये भी जानता था कि वो मेरे बिना दुकान चला नहीं पाएगा, हम्म, दैट वाज माय स्ट्रेंथ। हम्म, तो मैं जब अपना बांटना देखता हूं, मैं जानता हूं कि वो बंदा तो मेरे बिना जी नहीं पाएगा, हम्म, तो आएगा ही लाइन पे। हम्म, वो इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। अगर कैन दैट हम्म, सर, कंपटीशन, कंपटीशन आएगा भी तो इतना माल बेच नहीं पाएगा। आपका मार्केट शेयर वाली बात होती है ना, एक ब्रांड वैल्यू होती है, कस्टमर का, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन होती है। जो बिग बाजार 1000 टन नहीं बेचेगा हम्म, तो क्यों, किसका प्रोडक्ट बेचेगा, लोग लेने वाले ही नहीं है उससे। हम्म, अगर कोई नहीं रहेगा तो वो लेगा ही नहीं कोई। हम्म, वो बिग बाजार भी अच्छी तरह जानता है, उसके मैनेजमेंट टीम भी अच्छी तरह जानती है। हम्म। अच्छा, उस टाइम पे तो लाइक विशाल मेगा मार्ट एंड ऑल इतना सब कंपटीशन नहीं सब थे। सब 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 थे, सब थे। ठीक है। विशाल मेगामार्ट वगैरह सब छोटे छोटे बनते थे, बिग बाजार वाज द बिग ब्रदर। उसके बाद था रिलायंस, उसके बाद था आपका आदित्य बिरला मोर, उसके बाद था स्पेंसर, फिर हम्म, स्टार बाजार, आई मीन वगैरह वगैरह, बाकी सब छोटे थे। विशाल मेगामार्ट तो ऐसे भी छोटा ही था, ठीक है, हम्म, वीएमएम ऐसे ही छोटा था, ठीक है। तो एनीवे दिस वाज ये। और मैं वही बोल रहा हूँ, 2.5-3 घंटे लग गए थे वो नेगोशिएशन करने में। एक टाइम लग रहा था नहीं यार वो नहीं लेगा लग रहा है, ठीक है, मेरे पास जो और 50 पैसा पड़ा वो भी दे दो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने लास्ट तक जब अपने आप को शांत रखा ना, अल्टीमेटली वो समझ गए कि इससे तो निकलने वाला है नहीं और मेरा दुकान चलने वाला नहीं है, तो जो दे रहा भाई ले ले। तो कस्टमर के नीड्स पे बड़ा चोट मारा हुआ। कस्टमर पे नीड पे मारो। राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम, दैट्स व्हाट आई सेड ना, इंटरेस्ट समझो। अगर मैं उसी लाइन पे फिर आ जाता हूं, मैं उसी लाइन पे फिर आ जाता हूं, फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशन। मुझे 5 रुपया चाहिए उस पर फोकस मत करो, क्यों चाहिए 5 रुपया उस पर फोकस करो। अगर नहीं मिलता उसको 5 रुपया तो क्या करेगा उस पर फोकस करो। ये जो सेकंड लाइन है बहुत बड़ी लाइन है। वो क्या मांग रहा है उस पर फोकस मत, क्यों मांग रहा है उस पर फोकस करो। करेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव एज दे से रियली, कि प्रॉब्लम को पहले से देखा करो ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड दैट हैपेंस विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम एक बार आ गई ना, देन बीइंग रिएक्टिव इज अ लेट रिएक्शन, देन यू एक्चुअली स्टार्ट सर्वाइविंग। प्रॉब्लम आ गई है, हरिकेन आ गया है, साइक्लोन आ गया है, उसके बाद कुछ कर रहे हो ना, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सर्वाइव। बट पहले से अगर आप जानते हो कि साइक्लोन आ रहा है एंड यू गेट प्रिपेयर्ड, you have enough time with you to solve the problem. Begin with an end in mind, that there is a solution. Always think every problem has a solution. There's no problem on this earth which doesn't have a solution. Just think, how am I going to solve this problem?
and what should be the end? What do I expect out of this solution? Okay, if there is a cyclone, I am proactive that the cyclone is going to come. My mind should be that at the end of the cyclone, there should not be any, casualties. कोई death नहीं होना चाहिए. That's the end. उसके लिए क्या करना है वो करो. Put first things first. Prioritize things. अपने आप को organize करो, prioritize करो. ठीक है. Think of win-win. Again देखो win-win आ गया. Think of win-win. किसी के साथ किसी issue में problem है, both should win. He should also have a solution. I should also have a solution. Nobody should be in a problem. Nobody should lose. Correct. Seek first to understand, then to be understood. This is a very, very, very big segment. मैं negotiation के time से start किया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ. इस line पे focus करो. Both of you understand this line most. आपके साथ मेरा problem है. Understand me. Before even understanding, expecting that he will understand you. मैं सौरभ के साथ मेरा प्रॉब्लम है. Let Saurabh first understand me and then expect that I will understand Saurabh. ठीक है. Understand his problem, empathize on him, get into his shoes. If you don't understand his problem, you will not have intention to solve the problem. और ये is a very practical thing, happens with everybody, all of you. I can challenge. In your office, in your workplace, in your home, day in, day night, day out, there are problems. Problem with your child, problem with your wife, problem with your friends, problem with your relatives, problem with your office colleagues, co-workers, subordinates, seniors, managers. Whenever there is a problem with my manager, the first thing I think he's a bad man. कैसी बातें करता है. But did I ever try and understand, empathize and understand why is he behaving like this? What has gone wrong? Have I ever sat with him and asked him, sir, I know your behavior was not very nice, but if I may ask you, what went wrong? कुछ हुआ क्या? क्या problem है? Can I help you? पूरा situation, माहौल बदल जाएगा. And I trust nobody of you have done that ever. I have done it. I have done it in my life many times. Sat with my boss who was behaving dirty with everybody. Tried to understand his problem, tried to console him. Kabhi, he's in a deeper trouble than you and me. He's in a deeper problem than you and me. That's where he starts reacting. Okay. Otherwise, as a human being, nobody wants to harm others, right? Without any reason. आप जितना भी tough आदमी हो, you will not like to harm another human being unless you are getting hurt. So if you are getting hurt, can I help him to solve his problem first? And once I solve his problem, he will understand me, of course. Agar suppose, just example, your this year's achievement is 100 liters, 1,000 liters of some product. Next year, your boss gives you 1 lakh liters per target. And every month he starts shouting at you, screaming at you because you are not able to achieve the target. And you feel, यार क्या गंदा आदमी है यार, ये कुछ समझता नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है, सेल्स का कोई आइडिया ही नहीं है, ये मार्केट में कभी काम नहीं किया लग रहा है. Did you ever try and think, why did he first give me this target? Why is he behaving like this? What has gone wrong? Did something go wrong behind? Is the super management putting some pressure on him for some reason? Is there anything that I can help him out with? I know I am not able to achieve target. I am not able to do the sales properly because utna target bahut zyada hai, main kar nahi pa raha hu. But any other thing that I can help him to ease him out of his problem. ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है. He's behaving badly with office colleagues. है ना, बहुत टाइम होता है. And then once you do that and help him out of it, possibly he will try and tone down, come to
try to resolve the problem together and so on. Yeah. Sixth one is synergies. Okay. Once you've understood somebody and he has understood you, you have synergy of you're getting together. Okay. And coming to a point together. There's the synergy. Okay. And finally, you have a renewed relationship, renewed way of thinking, renewed way of doing business or whatever you say. From that problem, you have come out and you have started renewal. Okay. Okay. So negotiation skill, problem skill are the part of life. Be with that and try to improve your skills there. That's important. I think you've understood the basics of both of them. Okay. And negotiation is, of course, with a purpose. Okay. Both of you have a purpose. Problems are something which always doesn't come with a purpose. Okay. But it is a part of life. And when there's a part of life, again, I will tell you, emotional quotient, emotional intelligence is something which is going to help you a lot. Try. अभी से इस उम्र से practice करना शुरू करो. वो बोलते हैं ना patience, perseverance से मैं कैसे handle करूँ चीजों को. Don't get aggravated. Don't take tension. बोलते हैं ना हमारे मुंबई में बोलते हैं ना टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का. तो टेंशन देने का भी नहीं लेने का भी. आराम से धीरे से समझ के get into it. I'll tell you one very big change that has happened to me recently. नहीं काफी दिनों से. When I understood that yes, I am getting old. I'm slowly getting into 60 years of age. Another 1 year I'm going to be 60 years. I had already had a heart problem 2 years back. मेरा stents थे, angioplasty हुआ and so on and so on. And then I said, नहीं, I have to change my lifestyle. First of all, of course, I used to smoke. I left smoking. Okay. Biggest lifestyle change that I did to myself is my change in, my way I used to behave in certain situations. My aggravate होता जाता था. ठीक है. And you know what particularly मैं खुद देखता था, मैं जब कार चला रहा हूँ, कोई मुझे unnecessary overtake करके चला गया, left side से overtake करके चला गया, and I used to get aggravated. ठीक है. धीरे धीरे मैंने क्या किया, नहीं, I started ignoring them. I said, no, keep yourself safe. That's important. My driving में, trust me, last 6-7 years, I've stopped giving horns in driving. I can drive in the whole Mumbai city without a single horn from my home to the place. That is the best, test for my patience. गुस्सा करना छोड़ ही दिया मैं. नहीं, स्लो डाउन कर जाओ जहां पर स्लो डाउन करना है, हॉर्न मत दो. ट्रैफिक है, पीछे लोग हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, सिग्नल पे लोग हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं सिग्नल तोड़ के. वो ग्रीन से रेड से येलो हुआ, येलो से ग्रीन होगा या रेड से ग्रीन होगा, वो लास्ट 3 सेकंड दिखा रहा है, उसी में दौड़ रहे हैं. मैं बोला याद जाने दे, छोड़ो, शांति रखो. And that actually helps you a lot to tone down your behavior. That's important. That's where you will find a lot of great leaders in your organizations possibly practice that, and that's the reason वो बड़े आराम से धीरे से decisions लेते हैं, धीरे से शांति से behave करते हैं, and so on and so forth. I will tell you, हम लोग बचपन में बहुत साल पहले जब मैं सेल्स में था 86, 87, 88, Maggie was getting into a big brand in the Indian market, and अपना जो marketing head था इंडिया का, Mr. Bajwa, Superman, ठीक है. In fact, he was the person who created Maggie. He is known as father of Maggie. Indian Institute of Management उसका case study पढ़ाया जाता है. He was my first boss, ठीक है. And मुझे याद है the first competition Maggie का market में जब आया, एक brand था सुफू करके, कहीं नेपाल कहीं पर बनता था. क्या बोल रहे? ठीक है. That brand came into India and आके तो मार्केट में तहलका मचा दिया. सारे दुकानदारों को एकदम एग्जैक्टली हमारे मैगी जैसा पैकेट था और एक ऑरेंज कलर का था. सारे दुकानदारों को पैसा बांट के डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, ये वो फलाना ढिकाना. फलाना ढिकाना बहुत कुछ करना शुरू कर दिया. एंड देन हम लोग सब घबरा गए, सब बच्चे थे उस टाइम.
जस्ट कॉलेज से निकल के नौकरी कर रहे थे और एक इतना बड़ा ब्रांड हैंडल कर रहे थे मार्केट, उसका कंपटीशन आ गया मार्केट में, और मार्केट में दुकानदार हमारा माल ले ही नहीं रहा है। तो हम लोग मार्केट से जब ऑफिस लौट के जाते थे लोग, तो मिस्टर बाजवा थे वहां पर, बाजवा रहते थे, और कभी कभार हम लोग से मिल लेते थे आके, और फिर पूछते थे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में सब। तो हम लोग मायूस की तरह मुंह एकदम सूखा करके उनको बोलते थे, सर मार्केट में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, सुफू आ गया, ऐसा वैसा ये वो ना बिल्कुल आराम से शांति से सुनते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने सपोज हम 10 बात बोल रहे हैं तो वो एक बात भी नहीं बोलते, चुपचाप सुनते थे, हाँ करते रहते थे। और फिर लास्ट में सब कुछ सुनने के बाद 15 मिनट के बाद बोलते थे, डोंट वरी, लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, वी विल विन इन द मार्केट। ठीक है, आप अपना काम करते जाओ, अपना काम मार्केट में विजिट करना, दुकानदार से रिलेशन मेंटेन करना, बोलो दे विल डाई देयर ओन डेथ, डोंट वरी। एंड ट्रस्ट मी, 6 महीने के अंदर वो कंपनी बंद होकर मार्केट चली गई। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में इतना पैसा बांट रहे थे बेमतलब का मैगी को मारने के लिए कि उनका पैसा ही खत्म हो गया एक टाइम पे। इतना हालत खराब हो गया, वो ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिए, वो मार्केट में दुकानदारों को पैसा देके जगह खरीद रहे थे, स्पेस खरीद रहे थे, और कस्टमर पुल तो था नहीं, प्रोडक्ट वहीं का वहीं रह गया था। और जब प्रोडक्ट वहां का वहां रह गया तो एक्सपायर हो गया 6 महीने के बाद, उसके पास इतना भी पैसे नहीं थे कि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया तो उसको उठा लूं। ठीक है, ऐसे ही मर गया वो। सो दैट्स व्हाट आई मैं आज भी सोचता हूं तो सोचता हूं दैट्स पॉसिबली मिस्टर बाजवा का पेशेंस, परसिवियरेंस, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, करेक्ट। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, डिसाइड द सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो आएगा ही, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी दिया है अभी, आप एक तरीके से सोचोगे, मैं एक तरीके से सोचेगा, सीजन एक तरीके से सोचेगा, किसी और दोस्त को दो वो दूसरी तरीके से सोचेगा। तो एवरी प्रॉब्लम हैज मेनी सॉल्यूशंस एंड नन ऑफ देम आर राइट और रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोल्यूशन राइट है, रॉन्ग है, और ये सोल्यूशन राइट है, और एवरी सोल्यूशन हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड ओन अपॉर्चुनिटीज। तो इवैल्यूएट देन, फाइंड आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिसाइड द सॉल्यूशन, उसमें से एक को उठाना है। एज आई सेड, लीडर्स चूज व्हाट नॉट टू डू, करेक्ट। सो आपके पास अगर 10 सॉल्यूशन है, विच सॉल्यूशन यू विल नॉट यूज, दैट इज समथिंग योर जॉब इज। एंड वहां पर भी वही स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड थ्रेट्स ऑफ द एवरी सॉल्यूशन, वो काउंट करो, लिखो एक जगह में, कंपेयर करो, एंड देन से दिस हैज मैक्सिमम पॉइंट्स, हम लोग को इसको यूज करना चाहिए। इसका मतलब नहीं बाकी 9 सॉल्यूशंस गलत है, अभी के लिए दिस सॉल्यूशन इज द बेस्ट। And then decide on the solution, implement the solution, and then once the solution is implemented, फिर evaluate करो, उसको measure करो कि उसका result क्या है, करेक्ट। और जब तक वो measure करोगे तब देखना कि whether आपने जो solution choose किया है that was the best or any other solution was the best, फिर नया solution डालो। result क्या आ रहा है वो जरूरत है, अच्छा भी result आया तो evaluate करो, बुरा भी result आया तो evaluate करो। ओके, problem definition and techniques, I think hello. Can we take a 5 minutes break? Yes, only thing is that I'll finish in another 20 minutes. ठीक है, No तो problem. एक साथ फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड टेक्निक्स, आई थिंक आई विल अवॉइड दिस, और मे भी ठीक है कर लेते हैं। सो when I start by find out the origin of the problem, कहाँ से शुरुआत हुई है प्रॉब्लम की। ठीक है, where is the problem originating from, the root cause of the problem। ठीक है, then explore the problem, understand the problem well, present desired state of analysis. So what I said is, whatever your analysis of the problem is, present that desired state up, what you want that problem to, what is the solution that you think. That's what I said. Get the 10 solutions from all of us, sit together, think about more than one solutions and present those solutions, get those solutions ready. Okay, and then there's Ducker's diagram. I'll come to it later. Then statement and restatement. State the problem, state the solution, restate it properly. Okay, evaluate the problem. Okay, and again go back. Okay, so
the most important thing is Dunker's diagram. So achieve desired state. What you want to achieve. आपका solution क्या होना चाहिए? That's where you are going to now do an analysis. Possible path to the desired state. जैसे मैंने बोला solution 1, solution 2, solution 3. Okay. मैं उस desired state में मेरे को so just to give you an idea, my sales are going down. That's a problem. ठीक है. If that is a problem, have I understood the problem well? ठीक है. Have I explored the problem of sales down हो रहा है, कहां पर डाउन हो रहा है, किस रीजन पे डाउन हो रहा है, किस सिटी पे डाउन हो रहा है, किस सेल्समैन टेरिटरी पे डाउन हो रहा है, एकदम डीप डाइव करो. एंड देन प्रेजेंट द डिजायर्ड स्टेट, जहां पर आप इस पे आओगे कि मैं क्या चाहता हूं कि उस जगह का सेल बढ़े. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट. और उसको करने के लिए मुझे सोल्यूशन क्या है, मेरा पाथ क्या है, व्हाट इज द पाथ टू दैट. मेरे को कोई प्रोडक्ट का सेल इंडिविजुअली बढ़ाना है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है, मेरे को सेल्स पर्सन चेंज करना है, मेरे को और सेल्स पर्सन डालना है और डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाना है, व्हाटएवर. अब मैं करना क्या चाहता हूँ. ठीक है. सो मेरा डिजायर स्टेट क्या है एंड व्हाट इज द पाथ टू रीच द डिजायर स्टेट. सोल्यूशन टू इंप्लीमेंट एंड पाथ टू डिजायर स्टेट. तो मेरा दैट सोल्यूशन जो मेरे को इस डिजायर स्टेट में पहुंचाएगा वो निकालना है. देन पुट इंप्लीमेंट दोस सॉल्यूशंस whichever you want to be their best. But okay, that's a specific solution. Functional solutions, general solution, and specific solutions. Correct. Okay. General solutions, statements, restatements, very techniques. Okay. So when you have a fuzzy mess, total messed up problem, okay, get into the perceive the problem, relax, perceive the problem, restatement. इस problem को restate करो. If I say the sales have gone down, that's a problem. Okay. Can I restate the problem? Can I restate the problem? Make an opposite statement. Try it out. Try करो. My sales have gone down. I want to restate the problem. मेरा जो सेल्स है सर, वो एक्स एरिया में जो है लास्ट 6 मंथ से जो है डाउनफॉल हुआ है. सो करेक्ट. अब इसको रीस्टेट करो. यू हैव टू रीफ्रेज द प्रॉब्लम. रीस्टेट. मेक एन ऑपोजिट स्टेटमेंट. माय सेल्स हैव गॉन डाउन. मेक एन ऑपोजिट स्टेटमेंट. जिस एरियाज में हमारा सेल्स डाउन हो रहा है वहां पे हम इंक्रीज करने के लिए क्या एक्टिविटीज. नहीं, आपको प्रॉब्लम को रीस्टेट करना है. My sales have gone down. So down is a negative word. Okay. Okay. So can you say something which is hello? हाँ सौरभ बोलो. The sale is not up to the mark. वही हो गया ना, gone down. So अभी आप उसको opposite करो ना. Like how to get the better sales in that zone, or how to do the opposite. I didn't get the actually. So what you have to have said is my sales have gone down. Sales down होने से क्या होता है? आपका ग्रोथ कम हो जाता है. हमारा सेल जो है सर वो हमारे कंपटीटर्स के क्वांटिटी. So my competitors' sales have gone up. Correct. That's an opposite statement. Yes. My competitors' sales have gone up. That can be an opposite statement, one of the opposite statements. ठीक है. Or my degrowths have gone up. I was degrowing, that number has gone up. I was degrowing by 10% because my sales have gone down. Now the number have gone up to 15% degrowth. Correct. Or maybe एक तो मैंने बोला था my competitors sales have gone up. My और क्या हो सकता है? और competition is very high in the market. हाँ, so that's what competitor sales have gone up. That's a restatement, opposite restatement. हम अपने सेल्स टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, वो भी हो सकता है. My sales targets are high. That can also be a restatement.
ठीक है, whatever. Demand of the product is getting down. हाँ बोलो, कम. Demand of the product is getting down. फिर वो तो वही हो गया ना, डाउन ही हो गया, मतलब सेम जो बोल रहे हो, सेल्स इज गॉन डाउन. ठीक है, बट बेस्ट वन आई थिंक इज कंप्यूटर सेल्स हैव गॉन अप. ठीक है, नाउ if I say competitor sale has gone up, can I again restate it? Can I again restate it? Maybe competitors' activities have gone up in the market. इसीलिए competitor sale, competitor promotions have gone up, competitors' activities have gone up, competitors' price has gone down. ठीक है, our prices have gone up. Something, you're deep diving into the problem now. And finally, if you have 10 such statements and you find the final problem is that my price has gone up and the competitors' prices have, competitors have started doing more activities in the market. So I have to handle both of them. Correct. So deep dive, the idea of giving you this is deep dive into the problem. Deep dive into the problem, see what is it. हम लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं यार प्राइस बढ़ गया तो सेल बढ़ गई, सेल घट गई. ये नहीं देखिए कि आसपास में और क्या हो रहा है, कि मेरा कंपटीशन बढ़ गया, मेरा कंपटीशन ने बहुत सारा एक्टिविटी शुरू कर दिया मार्केट में, मेरे 5 डिस्ट्रीब्यूटर थे उसमें से 2 ने दूसरा कोई कंपनी का काम, कंपटीशन नहीं लिया बट दूसरा कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, उसका इंटरेस्ट कम हो गया हमारे में. Get into that problem, get deep into the problem and understand what is it, and then make a final problem statement and then try to resolve that. ठीक है, components of a decision on the future course of action, situation analysis, we have to do that. जैसे मैंने बोला, get deep dive, situation को analyze करो. Problem analysis in the past what is the fault, how to connect the fault, and how to prevent the future faults. So हमारा काम सिर्फ अभी के लिए नहीं है, इवन फ्यूचर के लिए ऐसा ना हो वो देखना पड़ेगा. ठीक है, so situation analysis, problem analysis in the past, decision analysis in the present, what do I decide now? ठीक है, what had happened, what am I going to do now, and how do I prevent any future problems? These 3 questions I have to answer. ठीक है, solution implementation process, decision in the best solution, find out the best solution, approve, get it approved, planning, carry through, that is execution, and follow up and evaluation. It's simple. This process is simple. Out of all the solutions, get the best solution, evaluate the solutions, and get the best solution. Get your approval by everybody, all the stakeholders. आपका पूरा टीम होगा, आपका मैनेजर होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा, सबका अप्रूवल ले लो. Then plan करो कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, then execute it and then follow up and evaluate. Correct. So that's the part of selling skill. Sir, can you please just go 2 slides back? This one? No, that's just before this one. This one? Problem? First problem, yeah. Dunker's one? Yes, this one. Okay. Yeah. Dunker's diagram is where you start from here. And after that? बोलो. No, sir, nothing. So Dunker's diagram यहाँ से start करते हैं. Present desired state है. आपने प्रॉब्लम समझ लिया डीप डाइव करके, आपको क्या चाहिए. मेरा सेल्स डाउन है, मैंने प्रॉब्लम डीप डाइव करके देख लिया, कंपटीटर का एक्टिविटीज बहुत बढ़ गया है. तो आपको करना क्या है फाइनली, व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट टू गेट द सेल्स अप. ठीक है, एंड टू गेट द सेल्स अप व्हाट इज द पाथ. दिस इज द पाथ. So I have got the desired state, I have to get the sales up. What are the possible path to the desired state? Competitor is doing activity, I will also do activity. I will also do more. Competitor has started giving discount. Can I give some other offers? Can I give some advertisements or whatever? These are my paths and these are the solutions after I get into that path. Okay, out of this one path I have chosen and this will give me 3 solutions, I will choose 1 solution out of that. No, मैं TV advertisement दूंगा. His path is to communicate with the customers. So I will give TV advertisement. I can give below the line sampling activity. I can do, events. Out of that, no, I choose the. I'll do advertisement. This is the solution 2 is what I choose. Come to the specific solution. Correct. So it actually Dunker's diagram actually comes from here. Present desired state से क्या आप चाहते हो,
आपका सोल्यूशन में से बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा, बट अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो? मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, करेक्ट? एंड फॉर दैट दिस इज द वे यू डिसाइड, यू फाइंड आउट कपल ऑफ पाथ्स। मैं किस रूट में सेल बढ़ाऊंगा? मैं ज्यादा दुकानों में जाके सेल बढ़ाऊंगा, या ज्यादा एक्टिविटीज करके सेल बढ़ाऊंगा, या ज्यादा प्रोडक्ट्स ला के सेल बढ़ाऊंगा? क्या करना चाहता हूँ? चलो, मैंने बोला नहीं, मैं ज्यादा एक्टिविटीज करके सेल बढ़ाऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? what are the solutions of those activities? Mera, I will go for TV advertisement, I will go for customer connects with sales promotion activity, I will go with media, whatever, and then I choose one of them. Correct? ठीक है सर? Okay. Sure. Great. Let me go to the last one here. हमारे पास अब कितने वीक हैं अक्टूबर में? Just check. September में today is what? Today is 23rd, 24th, sorry. So September तो निकल गया, 30 and 1st, 1 week, 7th and 8th, 2 week, 3 week, और फिर नहीं, ये 21st वाला वीक नहीं हो पाएगा ना, दशहरा की वीक है, करेक्ट? सो एक्चुअली हमारे पास 1 2 3 वीक और एकदम लास्ट वीक को भी अगर पकड़ लें तो 28, 4 वीक्स हैं। ओके, सो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एक काम करते हैं, सेल्स का भी आपको हमने सेलिंग स्किल वगैरह करा दिया, हम थोड़ा सा ब्रांड मैनेजमेंट भी चले जाते हैं, ठीक है? ओके, मैं आप लोगों को सेल्स का भी एक बुक भेज दूंगा, पर उतना डिटेल में बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फंडामेंटल्स पढ़ो। चलो एक काम करते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक, सैटरडे संडे तक ब्रांड मैनेजमेंट पूरा करते हैं, या तो उसके अगले वीक भी ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज अ ब्रांड, ब्रांड एलिमेंट्स एंड ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट्स, ये थोड़ा हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है? सो पहली बात तो ये है कि अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांड्स। मार्केटिंग अगर बोलते हैं, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड्स। हम लोग सुबह से शाम तक, सोचो जब आप नींद खुलती है और रात को सोने जाते हो, कितने ब्रांड के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड हैविंग द फर्स्ट कप ऑफ टी, इट हैज अ ब्रांड। जिस प्याले पे चाय खाते हो उसका भी एक ब्रांड होता है। वॉशरूम में जाते हो, टीथ ब्रश करते हो, टूथपेस्ट का एक ब्रांड होता है, टूथब्रश का एक ब्रांड होता है। सुबह से शाम तक पॉसिबली हम लोग कुछ नहीं तो 300-400 ब्रांड को इंटरेक्ट तो मिनिमम करते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट ब्रांड, इवन यू एंड मी आर ब्रांड्स। हम और आप भी ब्रांड ही हैं। वी हैव अ नेम, वी हैव अ कलर, वी हैव अ शेप। हाँ, possibly there are some brands. Amitabh Bachchan is a well-known brand. We are a lesser-known brand, but we are brands. Some people know you, some people know me. There's an audience who knows me, there's an audience who knows you, there's an audience who cares about you. आपका भी एक टारगेट ऑडियंस है, एक टारगेट सेगमेंट है। अमिताभ बच्चन का बड़ा है, आपका छोटा है, करेक्ट? आप भी किसी कस्टमर का नीड्स, वांट्स, डिमांड सेटिस्फाई करते हो। Do you agree with my statement?
So you are a product, and that product has a name, has a color, has a spelling to his name, has a font to his name, possibly also, has a shape. So you are also a brand, because American Marketing Association says a brand is a name, a term, a symbol, a sign, a design, a color, a font, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from their competitors. अगर पानी की बोतल जितने मिलते हैं ना मार्केट में, बिस्लरी, एक्वाफिना, किनले और जितने भी लोकल ब्रांड मिलते हैं, अगर उनके ऊपर ब्रांड नेम लिखा नहीं रहता है तो आप समझ पाते कौन सा क्या है? नहीं पाते ना. The brand itself differentiates them from their competitors. That's the most important thing. A brand is a name, term, sign, symbol, design, font, color. ठीक है? Or a combination of them intended to identify the goods. First क्या काम करता है? Identify the goods. ये बिस्लरी है, ये एक्वाफिना है, ये किनले है, ये XY, ये Y है. And to differentiate one from the other. ये पेप्सी है, ये कोका कोला है. Both are carbonated drinks. And Pepsi's bottle has a shape. Coca-Cola's bottle has a shape that also is a part of the brand element. That's why you can identify this is Pepsi, this is Coca-Cola. This is the difference between Pepsi and Coca-Cola. Correct. Whatever a marketer creates, a new name, logo, or symbol for a new product, a brand has been created. Even आप कहीं भी जाते हो, नॉर्मल प्लास्टिक के पन्ने में कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसके ऊपर खाली एक नाम छपा होता है या एड्रेस छपा होता है. दैट्स आल्सो ब्रांड. वी कॉल इट लोकल ब्रांड्स. सम ब्रांड्स आर लोकल ब्रांड्स, आपके मोहल्ले में मिलता है, उसके बगल में नहीं मिलता है. Some brands are regional brands, some brands are national brands, some brands are international, global brands. लेकिन ब्रांड तो ऐसा तो नहीं कि खाली पन्ने में डाल के दे दिया या खाली वो न्यूज़पेपर में बांध के दे दिया आपको. That's not a brand. It first of all, it should have a name, it should have a term, sign, symbol, design, whatever, one or two of them. Okay. Creates a certain amount of awareness, reputation, prominence, and so in the marketplace. Because it has a name, it has a symbol, it has a design, it has a color, it has a font, it has a quality, it has a service, and it is there in a product, it has some reputation, some awareness. लोग जानते हैं उस नाम को. Some prominence, little prominence or high prominence. That's small prominence, high prominence. Amitabh Bachchan have a very high prominence. Saurav Chaudhary has a very small prominence, very low prominence. But ऐसा नहीं कि I don't have prominence. I have a lot of prominence among my students, among my teachers, among my colleagues, among my faculties, among my society. People know me, ना? आपको भी जानते हैं ना आपके मोहल्ले में, आपकी कंपनी में. So you are also a brand. Correct. What are brand elements? The key to creating a brand, the elements are like name, logo, symbol, package, design, color, font, even sound. Of other categories that identifies the product. So even sound is a brand element. आप मैं एक ब्रांड को देखो तो उसमें क्या क्या रहता है. एक नाम तो रहेगा, एक लोगो रहेगा, एक सिंबल रहेगा, एक पैकेजिंग रहेगा, पैकेजिंग डिजाइन रहेगा, एक कलर रहेगा, एक फॉन्ट रहेगा. इवन कहीं कहीं पर साउंड भी क्रिएट करता है. कहीं कहीं पर शेप ऑफ द पैकेजिंग इटसेल्फ इज द ब्रांड शेप. ठीक है. आज थिंक अबाउट, आप एक मूवी देख रहे हो, सडनली एक रिंगटोन बजता है आईफोन का. आप क्या बोलते हो? आईफोन यूज कर रहे हैं. द साउंड इटसेल्फ इज द ब्रांड एलिमेंट ना. यू एसोसिएट विद द ब्रांड. करेक्ट. डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये जो नेम, लोगो, सिंबल, पैकेजिंग, साउंड वगैरह distinguishes, differentiate it from other products. Components that identify and differentiate a brand and are the other elements. Okay. ये वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी this is one core thing, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है. That how do you define a product? 5 levels
of meaning of a product. So a product, why do we make products? Why does a company make product? ये बेसिक्स में पहुंच रहे हैं हम लोग फिर से ऑलमोस्ट 10-12 क्लास पहले हम लोग इसको पढ़े थे. Why does a company make product? Saurabh, Meg, anyone? Why does a company make product? What is the reason company has made some product? Any company makes any product. It can be a goods, it can be a service, whatever. On the profit, sir. Profit तो बात की बात है. But why does he need to make a product? Who will buy the product? Customer, to create the customer. So why does the company make the product? To satisfy. Exactly. The product satisfy needs, wants, and demands of customers. Correct. That's why companies make products. Now, every product has a core benefit. Core benefits are those benefits that were there in the Maslow's hierarchy. Physiological benefits, food, water, shelters. Correct. Then security benefits, safety, security. Okay. Then possibly your social needs. Safety needs, uske baad social needs, uske baad esteem needs, aapka ego, and finally self-actualization. Every product on this earth satisfies those basic needs. Now I'll give you an example. I gave this example many times. You're going to a tourist place. You have booked a hotel. Why did you book that hotel? You needed a room to stay, to sleep, to have food possibly, to take rest. These are your basic needs. Maslow's hierarchy, physiological needs. You wanted to satisfy those physiological needs. कभी आप 5-star होटल में जाते हो, कभी आप 1-star होटल में जाते हो, but basic needs तो basic needs ही है. Food, water, shelter के लिए जाते हो. So that's the core benefit of that product, hotel room. Okay. Now, when you go to that hotel room, there's something basic you want in that room. You want a bed, you want a good washroom, you want a table, you want a chair, you want a light, you want a fan, you want an AC, you want a mirror. That's called the basic product. That's what is expected out of that room. Okay? That's what is going to satisfy the need of the customer. Core benefit ko provide karega. That will provide the core benefits. Correct? Right. Now that is called the basic products. Now, once you have got the basic product, okay, you need something from those basic products. That bed, that washroom, that table, that chair, the fan, light, AC, mirror. You need something. You expect something. You expect what? You expect a clean bed, clean linen, clean washroom. The light should be working. The fan should be working. The AC should be working. The room should be clean. This is what an expected product is. And then when you have entered the room, you find a bouquet of flowers, you find a basket of cookies and chocolates, a basket of fruits for you. And this is something which you did not expect. When you were entering the reception, there was a beautiful lady who came with a tray of juices for you, welcome drink. You did not expect this. This is beyond your expectation, and that is called an augmented product. Correct. Augmented product. Something which you did not expect beyond your expected product. Okay. And then once you have got that augmented product, you start feeling, aha, wow, that delight has come to you. Augmented products provide delight to the customer. And finally, there's something called potential product. The hotel people, they feel, how can I make my product better? Can I add a gym to my hotel? Can I add a swimming pool to my hotel? Can I add a 24-hour cafe shop in my hotel? And that's called the potential product. So any product on this earth
has this hierarchy, has these 5 levels. ठीक है, core product, core benefit, basic product, expected product, augmented product, and potential product. Correct? Okay. So from there, what are brands and what are products? A product is anything we can offer to the market for attention, acquisition, user, consumption. That might satisfy a need or want. A physical good is something like anything that we see around us, a cereal, a tennis racket, an automobile. These are all physical goods. There are services, the airlines, the bank, the insurance company. These are all services. There are retail outlets, departmental stores, specialty stores, supermarkets. Okay. There are political figures, celebrities, movie celebrities and sports celebrities, athletes. There are places, we know that there are places, tourism places, Taj Mahal, we go to Qutub Minar, we go to Lucknow. These are all places which are products. Correct? And they are ideas and social causes. Beti Bachao is a social cause. Make in India is an idea. Digital India is an idea. These are all products. Correct? They do some good. They satisfy some needs and wants and demands of the customer. Correct? And what's a brand? A brand is more than a product, since it can have dimensions that differentiate it from other products. Okay, Lucknow is a brand and Agra is a brand. Yeah, Taj Mahal is a brand and Imambara is a brand. And you can differentiate by the name. Lucknow is a place, Agra is a place, Varanasi is a place. Okay, you can differentiate by name, and that's what the brand does. All three are product, all three are places. But the name differentiates them, right? Correct. Did you get me the difference between a brand and product? A brand is a little more than a product. It has those dimensions that differentiates it from a product. Correct. Right. Okay. And last but not the least, brands versus product. Difference between a product and a brand may be rational and intangible. Okay. So a product is always tangible. Okay. You can see it, you can hear it, you can smell it, you can taste it, and you can touch it. Related to product performance of the brand. Product's performance is tangible. Okay. Or maybe more symbolic, emotional, intangible, related to what brands represent. Brands are more symbolic. They are more emotional. They are more intangible. You can possibly only see it, but you may not be able to touch it, smell it, taste it, or you hear it. Okay. It's more symbolic, more emotional, more intangible in nature. Okay. Related to what brands represent, and this one, tangibility, is all about mostly about products. Of course, services are intangible mostly. Okay. So more or less products are tangible, brands are intangible. Okay. Brands को हम लोग most importantly intangible in the sense about touch नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग खाली फील ही कर सकते हैं, इमोशनली, सिंबॉलिकली वी कैन सी इट. ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं. ओके, विल सी यू नेक्स्ट वीक एट 7 o'clock ऑन सैटरडे. और उसके पहले कोशिश करो कि वो तीनों मिलके बैठ के थोड़ा उस केस स्टडी को करो. ठीक है, बिकॉज यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडी नाउ, बिकॉज इसके बाद मैं आपको बड़ा केस स्टडी देने वाला हूँ. फिर आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा अगर अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है.